Assalamu alaikum friends, again welcome to my YouTube channel. Today our topic of discussion is chapter 3, Physiology of the Vision. What is light? It is visible portion of the electromagnetic radiation spectrum to which human eye is sensitive. Here you can see the prism, here white and light passing through red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. Here you can see the spectrum of the light. Light waves travels with a speed of 3,000 kilometer per second, almost 3 lakhs kilometer. White light is the combination of 7 wavelengths and each wavelength has its own color. This can be demonstrated by passing the white light through the glass prism which reflects. You can see the reflection of the light. Here it bends the rays of the different color to the greater or lesser extent of the different color. Red light has the longest wavelength while violet has the shortest wavelength. You can see red light has the longest wavelength while the violet has the shortest wavelength. What is the spectrum of light? The visible spectrum extends to the 700 nanometer at the end of the 400 nanometer, the violet end. Behind the long-ended red, the infrared heat radar and radio waves, where behind the short and violet there is the ultrasound, ultraviolet, X-ray and cosmic rays. Ultraviolet light is normally invisible because it is absorbed by yellow pigment of the lens. A specific color is perceived when the object reflect only one wavelength and the other are absorbed. For example, the object appear red when only the wavelength is reflected. The object appear white when the only all wavelength reflected and black when they are. अगर तमाम की तमाम जज़ब हो जाएं तो वो ब्लैक होगा. ठीक है. अगर हमारे पास कोई वेवलेंथ रिफ्लेक्ट कर जाए तमाम की तमाम तो वाइट होगा. तो अगर वो कह रहा है कि हमारे पास अगर सिर्फ रेड अपीयर कब होगी जब रेड वेवलेंथ हमारे पास रिफ्लेक्ट करती. सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ विजन क्या है. इन ऑर्डर टू अचीव दी कलर विजन क्लियर विजन दी लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन द विजुअल पाथवे बाय फॉलोइंग focusing the light ray on the retina of the both eye by refraction, accommodation, phototransduction, processing and transmission of the visual sensation by imaging process and the cell of the retina and visual pathway. Focusing of the image on retina, visual perception of the perceived image in the visual cortex. अच्छा, फोकस ऑफ द इमेज और रेटिना, रेटिना के ऊपर किस तरह जो है ना वो लाइट फोकस होगी वो हमने देखना है सारे का सारा. रिफ्रैक्शन, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस आर पैरेलल एंड डोंट फोकस ऑन द रेटिना, दे नीड बिहाइंड द रिफ्लेक्ट हो गया. द रिफ्रैक्शन इज डन बाय कॉर्निया, एक्वस लेंस, विट्रस विच आर डेंसर देन द एयर. फिर हमारे पास अकोमोडेशन आ जाती है. द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट लेस दैन 20 फीट आर डाइवर्जेंट एंड नीड additional refractive power of focus on the retina. This additional power is provided by accommodation reflex of the eye, change in curvature of the lens by increase the refractive power, change in size of the pupil in control the amount of light, convergence of the eye to see the object near the eye. Phototransduction mean photoreceptor rods and cone serve as the sensory ending for the visual sensation. The light falling on the retina cause photochemical changes in the visual pigment of the rods and cone, which in turn triggers the cascade of the biochemical reaction that result in generation of the electrical change is called receptor potential. ये मतलब उसने एक receptor potential की जो है ना हमारे पास definition लिखी हुई है. प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ द विजुअल इम्पल्स, किस तरह वो प्रोसेस होती है और ट्रांसमिट होती है. रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेटेड इन फोटो रिसेप्टर जो हमारे पास क्या थे रॉड से प्लस कोन से, transmitted by electronic conduction, direct flow of electric current and no not as the action potential to the other of the vision amacrine cell and ganglion cell. The ganglion cell transmit the visual signal by mean of action potential to the neuron of the lateral geniculate body, finally the primary visual cortex. Then हमारे पास आ जाता है visual perception, the visual impulses, the action potential is perceived by visual cortex. This result in following visual light sense, फॉर्म सेंस, कांस्टेंट कंट्रास्ट सेंस और कलर सेंस. जो है ना हमारे पास ये चार तरह की जो है ना विजुअल परसेप्शन होती हैं. लाइट सेंस में वो कह रहा है कि इट इज़ द अवेयरनेस ऑफ द लाइट बाय ऑल द ग्रेडेशन ऑफ द इंटेंसिटी. लाइट मिनिमम में मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट अप्रिशिएटेड बाय रेटिना, इसे हम लाइट मिनिमम कहते हैं. डार्क अडाप्टेशन एबिलिटी ऑफ आई टू अडाप्ट इटसेल्फ टू डिक्रीजिंग इल्यूमिनेशन. When one go from bright sunshine into the daylight room, one cannot perceive the object in the room until some time has elapsed.
during the time the eye is adapting the low illumination. Okay, the time taken to see the dim is the dark adaptation. The rods are much more sensitive to the low illumination than the cone. Scopic vision में फिर हमारे पास photopic vision होती है, ability to see the bright light. It is the function of the cone. मतलब रॉड्स का जो है ना वो रात के वक्त देखने के अंदर काम आता है, जबकि कोन्स जो है ना वो दिन की रोशनी देखने के लिए काम आता है. तो दैट्स ऑल अबाउट. नेक्स्ट हम हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन करेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.